Assalamu alaikum students. Our lecture for today will begin from where we left yesterday. We were yesterday studying about what is what is one of the impediments or what are the inhibitors that are inhibiting India to reach its potential GDP. Huh? So we studied most. I use different terminology based when I try to discuss that. I use different terminologies that we lack in these fronts, on these fronts, on these. We told that our gross fixed capital formation is not adequate. Our total factor, our labor productivity is not adequate. There is a this capital misallocation is there, and I try to acquaint you with several terms. These terms definitely you would have found it very difficult, these terms, but this is which will help you to write a better answer. You have to accustom yourself with these terms. Naturally, you may not have acquainted till now with these terms, and when we proceed with our further lectures, each and every term will be crystal clear to you. But whenever since you are a UPSC aspirant or a combined competitive exam or an aspirant from or state civil service aspirant, you have to go across newspapers. I don't want these terms to be alien to you. You should not find yourself in a discomfortable position while you go across these terms. That's why I used these terms. When we will proceed with different set of lectures, each and every term will be crystal clear to you, so you don't have to worry about it. So I'm aware of this fact. I can see that these might have been very tough to understand as of now. But when we proceed through our lecture series, these things are going to get clear. And I'll be making them clear one by one. And especially when we will be seeing the structural roadblocks to Indian economy. There are two types of roadblocks to Indian economy. One is cyclic, other is structural. Structural means we have a problem in our policy framework. That's structurally we have misframed our policy, or we have not framed it properly, or this should have been done like that, or there are shortcomings of our economy as a whole. Then there are cyclic. Those processes go on repeating after some period of time. Obviously, when we study about the slowdowns have to be studied in two perspectives. One is structural slowdown, other is cyclic slowdown. And whenever we'll go across these slowdowns in coming time, structural slowdown and cyclic slowdown, naturally these terms will again come to you. But I told you yesterday we will not be having a discussion further on these terms. But I'm sorry, the RBI report compelled me to make you understand this total factor productivity, because RBI, Reserve Bank of India, has recently published a report on it. When a report of any kind is published by any institution, it becomes very necessary and very important for your examination, since I don't want you to miss any kind of information that's important for your examination. So again, you will have to take today total factor productivity. This will help you to cover current affairs as well. So you do not have to have a separate current affairs module or a current lecture module for in any case in our economic series. I'll be discussing current affairs while we proceed with topics. जिस एरिया में करंट अफेयर्स हमारे पास मौजूद होंगे, हम वो एरिया साथ ही में डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक कम्प्रिहेंसिव framework का. Otherwise, our topic for today will have started from money and banking, but we will have to revert first back to total factor productivity. Today we will be started with total factor productivity because it is really important. It is important for your both preliminary and mains. I am taking topics in a consolidated manner, which are important for your both preliminary examination as well as main examination. We don't need to study in isolation. This exam does not allow us to study in isolation for two exams. We're studying for one examination, and we have to prepare ourselves, and we have to look
to these points that this can be asked as a mains question or it can be asked as a preliminary question. Total factor productivity. When I said yesterday total factor productivity, I said this is equal to total production by weighted average of inputs, that was just capital and labor. But I'm sure since most of you are engineers, you might have taken it as an equation as such, and you have found a direct or inverse relationship, but that does not work here. It has to be understood in various. That's why I took this topic separately. Otherwise, there was no need. Had it been simply a direct or inverse proportion, I would never have asked. I would have simply put forward the analysis of RBI. But I will have to go into the roots of this total factor productivity, which RBI emphasizes that these are some stimulating factors towards it, and we have to highlight those factors. Weighted average of inputs such as capital and labor. First we'll go to data part. What does RBI say? Data. When we analyze what RBI has published, what does RBI say? RBI says, please remember these sentences. This can directly come as a statement-based question. RBI report says that there has been moderate decline. There has been moderate decline in TFR, total factor productivity, as compared to global experience. As compared to global productivity, as compared to global experience. जो वर्ल्ड में इसके जो नंबर्स फॉल हो रहे हैं उस हिसाब से हमारे नंबर्स बहुत कम फॉल हो रहे हैं. Moderate decline as compared to. This is very important since we were yesterday worried about TFR, but RBI is giving us some green shoots. Total factor. I'm sorry. Total as compared to global experience. When I say global experience, I mean global productivity. दुनिया के लिहाज से अगर दुनिया में हम देखेंगे उस हिसाब से उनका भी डिक्लाइन है, मगर उनका डिक्लाइन ज़्यादा शार्पर है एज कम्पेयर टू हमारा डिक्लाइन. बट दिस स्टेटमेंट हम इस पे बिलीव कर ही नहीं सकते. इकोनॉमी जैसे हम पॉलिटिक्स में अगर हम सब्सिडीज की बात करते हैं तो वी ऑफन से सब्सिडीज और they are sense of they are a source of solitude for politicians, but nightmare for economists, because economists believe in data. Economists किस में बिलीव करता है? डेटा में. तो हम इस सेंटेंस में इस स्टेटमेंट पे तब तक बिलीव ही नहीं कर सकते जब तक हम डेटा को ना देखें. ठीक, हम इंडिया में देखेंगे पहले. ठीक है, इंडिया देखो तीन तरीके से. इंडिया डेवलपिंग एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज, and developed economies. इसका पोस्ट मॉर्टम किया. ठीक है, देखो इंडिया का डिक्लाइन इन दोनों से मॉडरेट डिक्लाइन है, मगर सबसे शार्प डिक्लाइन किसका है? डेवलपिंग एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज का. इसमें सबसे ज़्यादा शार्प है. अब हम डेटा से इसको ये करेंगे. अगर हम 2010 और 19
और फिर कोविड का ईयर 2020, 2021 की बात करें या 2022 की जो प्रोजेक्टेड है, अगर हम ये चीज़ देखें कि क्या, अगर हम इंडिया में देखें जो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ग्रो हो गई थी इंडिया में, इट हैज ग्रोन बाय 2.2%, क्वाइट ए गुड नंबर, ठीक। मगर 2020 में आपको पता ही है कि क्या हो गया, लॉकडाउन, हाँ, इट डिक्लाइन बाय 2.9%, देखिए ये नेगेटिव भी चला गया, इट डिक्लाइन बाय 2.9%, और 2021 में इट हैज मार्जिनली इम्प्रूव्ड बाय 0.1%, मींस मार्जिनली कैसे इम्प्रूव हुआ है, इट हैज मार्जिनली इम्प्रूव्ड बाय 0.1%, और 2022 में जो हमारी प्रोजेक्शन है वो अगेन दैट इट विल ग्रो टू 2%, नंबर वापस आएगा। सपोज मीन्स यहां से हमें अगर ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आया या एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन आया, हम बोलेंगे जो हमारा TFR है, देयर हैव बीन अप्स एंड डाउन्स इन दिस ग्रोथ, देयर हैव बीन अप्स एंड डाउन्स, मींस इट वुड बी इरेटिक। अगर हम ग्राफ की बात करें, इट वुड बी इरेटिक, कोई स्टेडी स्टेट इसने इख्तियार नहीं किया। समटाइम्स इट हैज गॉन बिलो जीरो एज वेल, इट हैज गॉन टू नेगेटिव, मींस इट हैज touched zero as well, it has gone to negative, then it has steep up, it has come back, it's means we are expecting, देखो 2% हमारी ग्रोथ 2.2% थी, फिर वापस डिक्लाइन हो गया by 2.9%, और अब -2.9%, when we say decline it means it has gone down to 2.9%, हाँ, तो डिक्लाइन है, ऑब्वियसली जब ये 2.2% है तो ये वापस जाएगा ना, जब ये 2.9 डिप करेगा तो ये वाला -2.7 तो माइनस में आएगा ना, आया समझ। तो फिर वापस 0.1% 2021 में, और प्रोजेक्शन है 2% तक, इट विल कम बैक टू 2%। हमें ये उम्मीद है कि इंडिया का जो TFR आया 2022 में 2% तक वापस आएगा, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, मतलब इट इज इरेटिक, इट इज नॉट स्टेबल ग्राफ, इट इज नॉट स्टेडी ग्राफ, ठीक। और इमर्जिंग इकोनॉमीज की अगर हम बात करें, हाँ, 2010 और 19 के बीच में ही इन 2 सालों की तो आप बात ही मत करो, 2021 और 2020 की बात ही मत करो, 2010 और 2019 की अगर बात करें ना, इट हैज श्रैंक बाय -0.3%, means they are not performing well। और डेवलप्ड इकोनॉमीज तो आपको पता ही है कि 2010 से ही स्लो डाउन चल रहा है, हाँ। Why that slow down? We know that. We know some of the reasons. There has been decline in culture of investment. There has been decline in employment rate worldwide, हाँ। ये हमें पता है कि नहीं है, ठीक। और अगर हम वर्ल्ड की बात करेंगे, मीन्स ये तो हमें इसके बारे में अगर 2021 टू यहाँ तक ये फिगर हमें पता नहीं है, इट हैज बीन अराउंड लेस देन, उतनी ग्रोथ नहीं है, मगर इट हैज 0.7% इसने ग्रो किया है 2021 में, कितना 0.7% in 2021, और again projected that it will shrink by 0.5%, shrink when arrow points down ये increase है, तो shrink by 0.5% 2022, means our economy, as per if we compare the total factor productivity of India, there is a decline, but that decline is very moderate as compared to global productivity or global scenario. 2.2 is absolute. While I have shown arrows, these are shrinking. Shrinking and increase. ठीक? And 2% is absolute. It is growth. You can also show increase here. It is growth. When arrow is coming down, it means it has decreased, decline. Obviously, growth. When I am writing a number, when I show growth, it has grown from some number. So increase. It is growth rate. When I say growth rate, it has to be shown increase. When I say decline, so it has to be shown arrowed down. समझ आया? हाँ?
कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन? यही बता दीजिए। How can it be minus? Why? Why can't it be minus? Suppose if we have seen a growth rate of 2.2% here, taken hypothetical example, and it has shrunk down by 2.9. What is the growth rate? Minus 0.7. That's how minus is. ठीक? Because we compare. 0.3 becomes absolute and there is no relative. Yes. ठीक, it is minus 0.3. I would have to replace minus by an arrow pointing downwards. That will all account for the same. But minus shows that we are going below zero. This is just a comparison. Don't mug up these numbers. This is just to show you a comparison how things have turned for India as compared to global scenario. There might have been some factors responsible. RBI has come to those factors responsible. RBI has explained that TFF growth can be explained through sensitivity to various factors, and we will have to analyze those factors. Yeah, I ask something. This is very important because while RBI report gives us the declining trend between India and global of world, ठीक है, जब हमें RBI इस ट्रेंड के बारे में हमें बता रहा है, साथ में हमें यही चीज भी बता रहा है that total factor productive growth can be explained. TFP can be explained. TFP growth, explained through sensitivity of economy towards 4 factors. ठीक है, अब वो हम एनालाइज वो 4 फैक्टर क्या है, ये आपका मेंस का सवाल यहाँ से आप आंसर अब यहाँ लिखने से तैयार हो गए, ठीक है। और ये खाली सर इसमें ये फैक्टर्स नहीं लगते, जब आपको बड़े लेवल पे आंसर लिखना होगा आप वहाँ भी ये यूज कर सकते हैं। इकोनॉमी इज ऑल अबाउट कोरिलेशन, हाउ यू कोरिलेट द थिंग्स, ठीक। जो हम पढ़ रहे हैं इससे आपके हर कोई मेन सवाल भी खुद ब खुद ही कवर हो जाएगा। जब आप ऐसे वर्ड इस्तेमाल करेंगे जो इकोनॉमिक प्रॉपर इकोनॉमी से लिए गए हो, आप उनको अंडरस्टैंड करके लिखते हो और फिर लिखेंगे उनके आंसर, तो आपको उसको खुद पता चलेगा दिस कैंडिडेट नोज इकोनॉमी, ठीक। फर्स्ट फैक्टर इज कैपिटल डीपनिंग। देखिए, अच्छा लाइव मिनट पे आर्टिकल आया है, उस पे ये एक्सप्लेन किया गया है ये सारा चीज, ठीक। कैपिटल डीपनिंग मीन्स if we have to measure an economy capital deepening, we measure it by an increase in fixed capital stock. We measure in growth in fixed capital this is what you were saying. What we were fixed? Fixed means total machinery, हाँ, total जो भी हमने वहाँ जो प्रोडक्शन में लगते हैं, हाँ, जो प्रोडक्टिव जो कंट्रीब्यूट करेंगे किसमें, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन में काम आते हैं, सपोज मशीनरी, इंस्ट्रूमेंट, जो भी हो, वो फिक्स्ड कैपिटल है, हाँ, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो, ठीक है ना, वो सारा इसी में, तो ये फिक्स्ड कैपिटल माना है, दिस इज व्हाट वी हैव इंक्रीज ग्रोथ इन फिक्स्ड कैपिटल। व्हाट विल इट लीड टू? देखिए, आप मुझे यहाँ पकड़ सकते थे सर, आप तो उल्टा बोल रहे हैं,
इक्वेशन के उल्टा आप बता रहे हैं। अगर ये वाला कैपिटल बढ़ गया, ये तो हमें प्रोडक्ट TFP डिक्रीज करेगा, बोलेंगे ना आप। मगर इकोनॉमी डज नॉट वर्क दिस वे. It's not a simple physics equation. There are so many things, other things related to this as well. जब आप एक ही चीज देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, मगर जब फिक्स्ड कैपिटल स्टॉक बढ़ जाएगा उससे प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी ना. Obviously they will contribute towards the factors of production. It increases the productive capacity in an economy. Growth in fixed capital, what will it do? It will increase productive capacity in an economy. When it increases productive capacity in an economy, means our production is increasing more than how jitna capital बढ़ गया. Now what will increase? TFP. Had you simply found it an equation, had you analyzed only like in physics equation, you would have said no, TFP is decrease हो जाएगा. But we'll be missing here. जब हमारा capital, fixed capital बढ़ जाएगा, that will increase amount of production in an economy. When amount of production will increase more than what we have fixed, more than our fixed capital, what will the equation lead to? It will increase TFP. Means TFP से capital deepening से क्या होता है? TFP increase in capital deepening means increase in TFP, means positive. Right? That is a positive feedback. It's directly proportional. समझ आया? तो मेहरबानी करके these are very important concepts and this is आप आम क्लासरूम में ऐसे concepts नहीं देखेंगे कहीं पे भी, तो इनको रिवीजन करना मस्ट है और इनसे आपकी आधी इकोनॉमी यहाँ ही सॉल्व हो जाएगी और आपका लेवल बहुत ऊपर जाएगा. ठीक है, दूसरी पॉइंट पे आए. ऐसे टर्म्स मुझे लगता है मुश्किल होगा आपको देखना वहां कहीं. कैपिटल कंपोजिशन, जब वो ऐसे आंसर आपको देखेगा उसको लगेगा ये कोई इकोनॉमिस्ट आंसर लिखा है. कैपिटल कंपोजिशन कॉन्सेप्ट इज मस्ट. व्हाई? बिकॉज अगर हम आम भाषा में बात करें, इट वुड मीन एवरेज रेंटल प्राइस ऑफ कैपिटल. इट इज एवरेज रेंटल ऑफ कैपिटल. अभी आपको समझ आया, अभी नहीं आया. ठीक, कैपिटल की जब हम बात करेंगे विल से कंस्ट्रक्शन है कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ना, मटेरियल्स, ट्रांसपोर्ट, इक्विपमेंट्स. जब कैपिटल कंपोजिशन बढ़ जाएगा, मीन्स एवरेज रेंटल प्राइस ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगा, इट विल डिक्रीज TFP. व्हाई? देखिए कैसे, मीन्स इसका क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप विद TFP है कि नहीं. मैं समझाऊंगा आपको. Should we understand why? Yes, it's important to understand why. Suppose मशीन, आपको कहीं पे प्लांट बनाना है, ठीक. प्लांट जब आप लगाएंगे आप देखेंगे मुझे कितना इनपुट कॉस्ट इसमें लगता है. अगर सीमेंट का भी कॉस्ट इंक्रीज हो गया होगा, पावर का भी कॉस्ट इंक्रीज हुआ है, जो मशीनरी आपने वहां लगानी है उसका कॉस्ट भी इंक्रीज हुआ होगा, आप इन्वेस्ट करेंगे. जब ये सारी चीजें
मीन्स कैपिटल कंपोजिशन मीन्स एवरेज रेंटल प्राइस ही ऊपर जाएगा, हाँ, तो आप इन्वेस्ट करेंगे। जब इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगी, हाँ, तो टीएफपी क्या होगा, नेगेटिव रिलेशनशिप। मीन्स अगर कैपिटल कंपोजिशन बढ़ गया, कैपिटल कंपोजिशन बढ़ गया, दैट्स एवरेज रेंटल प्राइस ऑफ ए कैपिटल बढ़ गया, तो विल हैव डिक्रीज इन टीएफपी। Why rental price? It says rental price does not mean a rent that has been taken like we say in common language. Means price of a commodities, but we use very specific term in an economy. Rental price means इनका Maybe transport is mostly rented, or equipment can be. no, it's not like that. It means जो जो चीजें आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसका प्राइस इंक्रीज होगा, ठीक है। Now third point, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी मैंने आपको कल समझाया था थर्ड पॉइंट, मगर डिफरेंट तरीके से, आज ज़्यादा तरीके अच्छे से समझाएगा। लेबर क्वालिटी, यहां किसकी बात हो रही है? कल मैंने क्या बोला था, जब आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, इग्नोर, मगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को इग्नोर करने की कोई जरूरत नहीं है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब इन्वेस्ट करेंगे आप, तब आपकी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अच्छी हो जाएगी। जब आपकी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अच्छी होगी, आपकी जो वर्क फोर्स होगा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में जो वर्कर्स का पार्टिसिपेट करेंगे वो अपस्किल्ड होंगे। क्या होंगे? उनकी अपस्किलिंग हुई होगी। जब उनकी अपस्किलिंग हुई होगी, मीन्स देयर क्वालिटी वुड बी, when their quality is better, the production in an economy is better, ठीक, वो means labor quality will increase TFP। समझ आया? आसान है कि? Now last, input use intensity। जो भी आप इनपुट्स इस्तेमाल करते हैं, तो यहीं से बताइए क्या होगा। जो भी आप इनपुट्स यूज कर रहे होंगे ना, उनको वो एफिशिएंसी वो बिल्कुल प्रॉपरली और एफिशिएंट तरीके से यूज करने हैं। वो उन इनपुट्स में कितने, अगर ऐसे ही अगर आपने फैक्ट्री लगाई, उस फैक्ट्री में उन जो आपने स्टॉक लगाया होगा, जो आपने मशीन लगाया, उसका भरपूर काम हमें लेना है। अगर हमने वो भरपूर काम नहीं लिया, हम वो स्टॉक्स ऐसे ही रहेंगे, मीन्स हमारी इंटेंसिटी कम है, इनपुट यूज इंटेंसिटी कम है। जब इनपुट यूज इंटेंसिटी कम है तो हमारा टीएफपी भी कम ही होगा। मीन्स जो अगर हम अच्छे तरीके से इसका पॉजिटिव, सिर्फ नेगेटिव कोरिलेशन एक ही के साथ, दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल कंपोजिशन। तो मगर इनपुट यूज इंटेंसिटी अगर अच्छी होगी तो क्या होगा? इंक्रीज टीएफपी। नाउ ये तो हो गया। अब हम अंडरस्टैंडिंग के साथ कोरिलेट करना शुरू करेंगे कि यूपीएससी कैसे सवाल पूछेगा। यूपीएससी आपको टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी पे मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। इस पे पूछ सकता है, प्रिलिमिनरी में पूछ सकता है कि टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी क्या है, आरबीआई रिपोर्ट क्या क्या कहती है इसके मगर। और फिर अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे इन 4 पॉइंट्स का इस्तेमाल करके आपको सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है, इनका लिंक डेवलप करके। आमतौर पर आपका सवाल हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे भी, चूंकि यहाँ मैक्सिमम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादातर हम किसके साथ इससे रिलेट करते हैं? इंडस्ट्रीज के साथ। तो आपको पूछेगा वो इंडस्ट्री के बेसिस पे ये सवाल कि हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो के भी why India is not able to achieve its full potential। यहाँ जाके फिर वो सवाल फिट हो सकता है। या तो what have been the structural bottlenecks in India that it's not able to increase its total factor production,
and what steps have been taken recently by the government of India to do the same? ऐसे सवाल पूछे जाते और पूछे जा सकते हैं। तो जरूरी है गवर्नमेंट, जब हमें ये चीज पढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट भी कोई काम कर रहा होगा ना इसको चीज करने के लिए। आप वो आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो अगर हम देखेंगे रिसेंटली गवर्नमेंट किन मामला में ये काम कर सकते, क्या क्या कर सकता है। इन्हीं चार कैपिटल, इन्हीं पॉइंट्स को जो हमारे स्ट्रक्चरल, जो इसको स्टिमुलेट करते हैं, जो इनकी सेंसिटिविटी, जिस पे इसकी सेंसिटिविटी बेस्ड है, इन्हीं को यूज करना है आंसर बनाने में। दिस इज ट्रिक। विदाउट स्टडिंग टू मच यू कैन ऑलरेडी स्टडी लॉट ऑफ थिंग्स। इन्हीं चार पॉइंट्स को हम देखेंगे कैपिटल डीपनिंग कैसे हो सकती है, लेबर एफिशिएंसी कैसे बढ़ सकती है। ऑब्वियसली लेबर एफिशिएंसी हम अपस्किलिंग करके कर सकते हैं। मींस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स हमें करने हैं, गवर्नमेंट ने की होगी। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने कुछ ऐसी स्कीम्स आई जहाँ अपस्किलिंग ऑफ लेबर्स किया होगा, मींस उनको यूज कर रहा है अपने आंसर्स में। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग का, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का जिक्र है, उसको यूज करना है कि कैसे हमारी है और हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, उसमें क्या क्या हम चाहते हैं, उसमें क्या हो जाए। और साथ ही में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो बोटल नेक्स्ट थी, उसके रिसेंटली गवर्नमेंट ने बजट 2023 में क्या एक प्रोग्राम लाया, पीएम गति शक्ति। ये पीएम गति शक्ति क्या है, कल आप मुझे बताएंगे ये पीएम गति शक्ति क्या है। ऐसे ही नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन क्या था, ऐसे ही नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या है। मींस देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वेयर यू कैन कंस्ट्रक्ट आंसर फ्रॉम। ठीक है, इन्हीं चार पॉइंट्स को यूज करें। ठीक, विदाउट स्टडिंग, फिर यही, अदरवाइज व्हाई वुड यू स्टडी सो मेनी थिंग्स इन योर एग्जामिनेशन? यू कैन नॉट स्टडी, दिस इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। You have to adjust your brain and correlate things on a larger scale. I think this topic would be more आपको ये पूरी तरीके से समझ आया होगा, आई एम श्योर। इस पे जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी आप कोरिलेशन आगे कर सकते हैं, आगे जाके भी हम जब स्ट्रक्चरल इम्पेडिमेंट्स देखेंगे हमें, और कल मैं आपसे पूछूंगा कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी में क्या रिलेशनशिप है। ये आपके लिए कल सवाल है। अगर कल जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होंगे वो इसका जवाब मुझे कमेंट्स में दे, मगर क्या है पूरी तरीके से कि ग्रॉस फिक्स्ड, हाउ इज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी रिलेटेड टू ईच अदर। ये आप मुझे कल ये जवाब देंगे। क्लास में जो आते हैं और जो ऑनलाइन पढ़ते हैं वो कमेंट्स में लिखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, दिस विल बी ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।